Compared to the gold, it's even expensive than the gold. Pakistan is, I think it's possible because this one is what I said. The cocopeat substrate is not soil; it's a soilless cultivation. यह मिक्सिंग टैंक और इरिगेशन यूनिट है। यहाँ पानी और फर्टिलाइजर्स को मिक्स करते हैं और पंप करके आगे पौधों को ट्रांसफर करते हैं। 15 grams per tomato. We can increase the temperature, increase the radiation through the HPS line, increase the radiation, provide better environment to it. Maybe you can increase to 16 or 17. Yeah, this one is bumblebee. It's not a normal honeybee, it's straight with high frequency, and then the pollen come out. Yeah, you can see we also use cocopeat here. It's not soil, it's also cocopeat. This is the root of the lettuce. The roots are quite healthy. ये अब मैं अपने साथ वापस यूनिवर्सिटी ले जाऊंगा। ऐसे नहीं, शुरू से देखते हैं। अट्ठाईस मार्च 2025, 28वां रोज़ा, पहला वीलॉग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहरी के बाद सुबह 7:30 बजे उठने का टाइम आ गया था क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्रीन हाउस टूर पर जा रहे थे। इसलिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ चाइना में बार्बर्स दाढ़ी नहीं बनाते, इसलिए हमें खुद बनानी पड़ती है। तो मैंने सबसे पहले दाढ़ी की ट्रिमिंग की, फिर ब्रश करने के बाद शावर लिया और तैयार होकर ग्रुप के साथ मिलने के लिए निकल गया। और इसी तरह 7:30 बजे हमने अपने मंजिल की तरफ सफर शुरू किया। ये जो वीडियो बना रहा है ये मेरा रूममेट है, इसका नाम अब्बास है, स्वाद से इसका ताल्लुक है और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में PhD कर रहा है। बहुत ही अच्छा सिंगर और गिटारिस्ट है। और जो मेरे साथ बैठा हुआ है इसका नाम लुकमान बाचा है, बाजोवर से इसका ताल्लुक है और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में PhD कर रहा है। और इसी तरह 1.5 आवर में हम अपनी मंजिल पहुंच गए। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं खुद एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं और हम ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ मॉडर्न, कुछ एडवांस और कुछ अलग देखने को मिलने वाला था। गाड़ी से उतरने के बाद दोस्तों से मिला। ये ताहिर अफगानिस्तान से है और यहाँ चाइना में लीडरशिप एंड पॉलिसी में PhD कर रहा है। इनसे मिलिए, ये है चंगेज खान। चाइना के सारे शहर देखना मेरी तरह इसका भी एक ख्वाब है। यह एनवायरमेंटल साइंस में PhD कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेफ्ट साइड पे अनवर है, दीर से इसका ताल्लुक है, और राइट साइड पे अली है, हैदराबाद कराची से। कैफेटेरिया में थोड़ा रेस्ट करने के बाद फाइनली ग्रीन हाउस को एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया था। I just informed that I need to introduce in English because most of you can only understand English, so I try my best. So my name is Yu Chong. I'm a senior grower here. So basically, we are a greenhouse production company. It belongs to BUCG6. It's a national-owned company, and this greenhouse is around 3 hectares. So basically, we grow tomato and lettuce here. Let's move to next room. If you have any questions, just ask to me. Don't hesitate. And as you can see, we are located in a greenhouse. Technically, it's a high-tech greenhouse. So here we use all the facility to control the environment. Yeah, we can see here we have a tomato grow area. गाइड हमें टोमेटो सेक्शन में लेके गया और बताया कि इन पौधों को मिट्टी में नहीं बल्कि कोकोपीट में उगाया गया है। कोकोपीट कोकोनट के स्किन से बनाया जाता है जो कि एक कुदरती प्रोडक्ट है। कोकोपीट जरासीम से पाक होता है और पानी को ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन रखता है। ये बहुत लाइट होता है जिसकी वजह से पौधे की जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। गाइड ने बताया कि पानी को ज़मीन से वाटर पंप के ज़रिए निकाला जाता है, फिर इस पानी को फिल्टर करते हैं और उसके बाद पाइप्स के ज़रिए ये प्योरीफाइड वाटर जो है ये पौधों को ट्रांसफ़र करते हैं और इसी तरह पाइप्स के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली कोकोपीट में मिक्स हो जाते हैं जो कि सारा का सारा पौधा कंज्यूम कर लेता है। मिट्टी में ऐसा नहीं होता। मिट्टी में अक्सर फर्टिलाइजर्स या जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो कोकोपीट ना सिर्फ पानी को बचाने के लिए मुफीद है बल्कि ये न्यूट्रिएंट्स को 100% पौधे को प्रोवाइड करने के लिए भी बेहतरीन है।
पानी और न्यूट्रिएंट्स के अलावा पौधे की ग्रोथ के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए ग्रीन हाउस ग्लास का बनाया गया है ताकि पौधों को सनलाइट मिल सके। इसके अलावा इन्होंने यहाँ सप्लीमेंट्री लाइट्स भी लगाए हैं, क्योंकि जब स्नोफॉल या बारिश होती है तो ये सप्लीमेंट्री लाइट्स ऑन करते हैं। इसमें कुछ हाई प्रेशर सोडियम लाइट्स हैं जो कि सख्त सर्दियों में ग्रीन हाउस को गर्म रखते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस में इलेक्ट्रिक इंसेक्ट्स किलर, ब्लू लैंप्स और HIT येलो टेप भी लगाए गए हैं, जिसके ज़रिए मच्छरों को मारते हैं। गाइड से मैंने क्वेश्चन किया कि क्या हम इस पौधे को ओपन फील्ड में लगा सकते हैं। This cultivar we can grow it in the open field, but it's not worthy because it's a greenhouse specific cultivar. We transplant it at September 2024, and we will grow until June of 2025. It's around 10 months. So it has a better water uptake. It grows very fast. It can produce a lot of tomato. But if you grow it in the open field, condition is not suitable for this cultivar. So the performance of this cultivar, grown in a controlled environment. yes, and it's quite expensive. Each seeds around 15 yuan each. It's even we calculated if you compare to the gold, it's even expensive than the gold. Okay. Based on the weight. इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन किया कि क्या इनकी कंपनी इस तरह के ग्रीन हाउस बाकी ममालिक में लगाने की सर्विस देते हैं कि नहीं। Yes, we can build some greenhouse overseas. Actually, if you look for some project, we build a greenhouse in Mongolia, I think, and in Middle East. We have some project actually. What about Pakistan? If somebody wants Pakistan is, I think it's possible because there. I'm not pretty sure, but I think sometimes not that hot, and winter time maybe a little bit cold. But for greenhouse, cold is not a problem. You only need to heat up the greenhouse. approximately budget for such kind of greenhouse if somebody wants I think this is the most expensive facility for agriculture. It's around 1,500 for each square meter. Yes. But Yeah. this is just like one time investment. Yes, you can use for like 20 years. It's quite sustainable. इसके बाद गाइड हमें एक और सेक्शन में लेके गए। Yeah, here you can experience there's a higher temperature, higher humidity because we provide a best environment for the plant, not for the human. This one is what I said, the cocopeat substrate is not soil, it's a soilless cultivation. Why we use cocopeat? Because it can contain more water at the same time. The oxygen level is also high, so it's suitable for the plant to grow in such an environment. And also some soil disease it did not contain, so it will not spread the soil disease because it's basically it's not soil, it's a cocopeat. So the nutrition comes from this dripping system, and it will provide a precise volume of nutrition to the plant. So how much in it, we just provide the exact volume, not too much, not too less. यह मिक्सिंग टैंक और इरिगेशन यूनिट है। यहाँ पानी और फर्टिलाइजर्स को मिक्स करते हैं और पंप करके आगे पौधों को ट्रांसफ़र करते हैं। गाइड ने बताया कि यहाँ मोस्टली फीमेल वर्कर्स हैं और मोस्टली हार्वेस्टिंग का काम वो करती हैं, और बाकी भी जितने सारे काम हैं तो वो मोस्टली फीमेल्स करती हैं। इसके बाद गाइड ने टमाटर के साइज और बम्बल बी के बारे में बताया। 15 grams per tomato. We can increase the temperature, increase the radiation through the HPS line, increase the radiation, provide better environment to it. Maybe you can increase to 16 or 17. Yeah, this one is bumblebee. It's not the normal honeybee because in greenhouse bumblebee is more delicate, because honeybee sometimes they only pollinate the flower they like, but bumblebee they pollinate every flowers. Even so the flower is not so colorful, it's not so good, but it will pollinate every flowers, which means it will make more consistent.
That's why you can see every fruit they have the same size. If you use honeybee in the greenhouse, then maybe this one is larger, this one is smaller, and this one is larger. We cannot provide high price for this kind of stuff. तो ग्रीन हाउस में बम्बल बीज को पोलिनेशन के लिए रखते हैं। गाइड ने बताया कि 2.5 स्क्वायर एकड़ के लिए 10 बॉक्सेस चाहिए होती है और हर बॉक्स में 80 से 100 तक बम्बल बीज होती है। The yellow one? Yes. Yeah, the yellow one. They need to the bumblebee need to attach to the flower and then shake with high frequency and then the pollen come out. बम्बल बी 2 मंथ्स के लिए जिंदा होती है। इस तरह हर 2 महीने बाद ये और बम्बल बीज खरीदते हैं। इन्होंने बताया कि वंस अ वीक ये हार्वेस्टिंग करते हैं और ग्रीन हाउस में टमाटर का पौधा 10 महीने तक ग्रो करता है और पौधे की बेल 10 महीनों में 16 मीटर तक पहुंच जाती है। गाइड ने बताया कि इतने जितने ग्रीन हाउस की सालाना इनकम खर्चे वगैरह सब निकाल के तकरीबन 5 मिलियन युआन तक होती है। गाइड ने हमें लेटस सेक्शन भी दिखाया। लेटस सैलेड की फैमिली से है और चाइनीज बहुत शौक से खाते हैं। इसको रॉ फॉर्म में भी खाया जा सकता है और पका के भी खाया जा सकता है। As you can see, we have letter growth area. So here we use a mobile gutter system. What is mobile gutter system? You can see the mobile is the gutter is movable. So we transplant the letters here, and then after around 40 days we harvest at the other place. Our environment in the greenhouse is controllable. For example, the radiation, temperature, humidity, we control almost all the parameters to provide the plant the best environment. From here to harvest is around 40 days, but from the seed we still need to create the seedling. So from seed to here is around 20 days. So in total is 60 days. During the growth of the plant, you can see the distance become larger. So we create a uniform condition for the plant, and larger. If we harvest all of this gutter and then we push out the button, the gutter will move from that to here, and then we clean this gutter, disinfect, and then place it to the other side again, and then put the new seedling here. So, and during the whole stage, we don't need people to operate. Yes, because they only need to put the seedling there, harvest here. That's the only 2 works they need to do, only 2 jobs. And you can see the distance become larger compared to that side. So we create a better environment between the leaves. Yeah, you can see we also use cocopeat here. It's not soil, it's also cocopeat. This is the root of the lettuce. The root is quite healthy. It's white and you did not see any pests or any dirty thing at the root. And we did not cut here. We sell the whole plant, including the root, because normally we use a cloth, some material like our clothes, to cover the whole root zone. So when the customer they receive this product, they can eat the leaves and then put the root on the other grasses, and then they can grow continually. Again, yes, that's why we create and increase the value of this product. If you cut the roots and then it just going to yes, that's what I want to say. मैंने और अब्बास ने चाइनीज़ चाय सेक्शन भी एक्सप्लोर किया। चाइनीज़ चाय गार्लिक लीव्स होती हैं और चाइनीज़ बहुत शौक से खाते हैं। इसको साग की तरह पकाया जाता है या किसी और डिश में भी आप मिक्स कर सकते हैं इसको। आखिर में सबको खाली पेक्स दिए गए और सब ने अपने लिए फ्री के लेटस और टमाटर तोड़े। सब ने बहुत एंजॉय किया।
que un sabor. لكن هذا من دبارني بس من يوم كم قريت بقول لا أجيب ده أو زمبي. अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब भाई, आपने जैसा देखा यहाँ हम ग्रीन हाउस सिस्टम पे आ जाए हैं। बड़ा मॉडर्न है यहाँ के न्यूट्रिएंट्स का, पानी का सिस्टम और जो पीट यूज़ करते हैं, और फिर क्वालिटी आप देखें बहुत एडवांस है। फील्ड में अभी मैंने ये टमाटर, ये अब मैं अपने साथ वापस यूनिवर्सिटी ले जाऊंगा और एंजॉय करेंगे। और आपके कैमरा वर्क का आज मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने अच्छा कैमरा वर्क किया। थैंक यू। कैफेटेरिया में लंच की अरेंजमेंट्स हुई थी। हमारा तो रोज़ा था, लेकिन बाकी दोस्तों ने जब लंच किया तो हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े।